गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। देवेंद्र कुमार फिर आपके साथ क्लास 12 के लिए पोइम नंबर 4 अ थिंग ऑफ ब्यूटी के साथ सुंदरता भरी वस्तुएं। डियर स्टूडेंट्स, थिंग ऑफ ब्यूटी is really an inspiring poem, very motivational poem, a poem to make us realize really the beautiful thing in the world. Dear student, John Keats, the creator of this poem, had been a surgeon, and to give up the profession of surgery, he came to writing as he could change the mind of the readers with his creation. Here, through this poem, I am damn sure you must have a totally different attitude about your counting, about your measuring the value or the things for their beauty. What the poet wrote here, I'll try my best to explain in Hindi as well as in English both. A thing of beauty is a joy forever. Poet says, a beautiful thing is a thing which gives us happiness for forever. सुंदर वस्तु वो वस्तु होती है जो हमेशा खुशी देती है. It doesn't mean the beauty of external appearance, as in the age by the 12th standard, the student enter in the comes to the adolescence threshold of the adolescence, वयस्क होने की कगार पर आ जाते हैं. दे हैव द डिफरेंट एटीट्यूड अबाउट द ब्यूटी. कभी कभी उनका सुंदरता से मतलब एंटी जेंडर की अपीयरेंस से होता है, कभी अपने सराउंडिंग की अपीयरेंस से होता है. बट स्टैंड्स इन फैक्ट द ब्यूटिफुल थिंग्स आर द थिंग्स विच नेवर लूज देयर ब्यूटी. दे नेवर टर्न इनटू नथिंगनेस. वो कभी व्यर्थ में नहीं जाती. इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस. The beauty of beautiful things always increases. हमेशा बढ़ती है इनकी सुंदरता. It will never pass into nothingness. Whatever the external beauty we are having in the world can destroy, can fade it, but the really beautiful things never lose their beauty. वो कभी अपनी सुंदरता नहीं गंवाती. संसार की बाहरी सुंदरता, शारीरिक सुंदरता हमेशा धीरे धीरे फेड हो सकती है, धीरे धीरे बढ़ सकती है. छोटा सा बच्चा अपने पेरेंट्स को बहुत प्यारा लगता है, वही बच्चा पड़ोसी को हो सकता है किसी उसके कर्म के कारण, किसी एक्टिविटी के कारण अच्छा ना लगता हो. बट ब्यूटिफुल थिंग्स मीन्स अ थिंग विच नेवर लूज इट्स लवलीनेस, बट इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज ऑलवेज, बट विल कीप अ ब्यूटिफुल थिंग्स लाइक the thing which will keep you above a shadow of the bunch of trees of an orchid. पेड़ों के झुंड की तरह, पेड़ों के झुंड की गहरी छांव की तरह. And a sleep quiet for us, and a sleep full of sweet dreams which provide us really a sound sleep. Children, you may have the different attitude, as right now you don't have the beautiful bunch of the trees, you don't have the grove. आजकल बगीचे आपके पास नहीं है. You can imagine as you are sleeping after the hard and honest labor in an AC room. बड़ी ईमानदारी के साथ कठोर परिश्रम करके जितनी प्यारी नींद आपको AC रूम में आती है, वो इस उसी की तरह सुंदर वस्तुएं होती है जो आपको राहत, आपको बेचैनी नहीं, चैन, सुकून देती है. जैसे कोई ने लिखा, like a bower of the trees, like a bower quiet for us and asleep, and full of sweet dreams. It has the sweet dreams and health and quiet breathing. It provides you happiness, healthy, as well as the modern beautiful things. If somebody having the taste for some edible item which are not really useful, may spoil their health, those are not beautiful. They may have the external or the only taste for a while the beautiful things are constant in their taste, in their loveliness, they always continue. Children, in the next extract, poet writes here
Therefore, on every morrow, every next morning, this way, the beautiful things always on new morning are we writing, are weaving us, हमें गूंथ रही हैं, जोड़ रही हैं, a flowery band to bind us to the earth, with a flowery band, with a strip of, with a garland of flowers to this earth. Sometimes we find that we have an issue with our parents, but another time we find the parents who loved us, who cared us, who looked after our all the needs. We find that ourselves close to them, attached to them. The same way, beautiful things never lose their loveliness. They are just like the foundation of the flowers which tied us with the earth. सुंदर वस्तु वास्तव में फूलों के उस एक बंधन की तरह है जो हमें पृथ्वी से, जो हमें आपस में एक दूसरे के साथ जकड़े हुए हैं और बांधे हुए हैं. A flower, spite of despondence, spite in the lack of despondence, sorrow of the innumerable the actions the man had committed of noble natures of the gloomy days in number of cases because of its gentleness, because of its nature, and the gloomy days and the days of the sadness of all unhealthy and over darkened ways. Whatever is unhealthy and has impacted our soul with the sadness. In fact, spite of despondence, दुखों के बावजूद, दुखों में कमी लाने के साथ साथ हमारे मानवीय कर्तव्यों को, करतूतों को बड़ी प्रवृत्ति, सुंदरता के साथ आगे की तरफ बढ़ाती है और हमारे मन पर से अंधेरे को, उदासी को, अब निराशा को दूर ले जाती हैं. ऑफ ऑल अनहेल्दी एंड ओवर डार्केंड वेज, वट एवर इज अनहेल्दी, जो भी दुखद, जो भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, उन सबको जस्ट लाइक द इट टेक्स अवे, इट रिमूव फ्रॉम अवर लाइफ, मेड फॉर आवर सर्चिंग एंड इट मेक अस टू कंटिन्यू द सर्च, the inventions, the discovery, yes, in spite of all. And after these all, some shape of beauty moves away the pall. And in fact, the beautiful things, like those shape, like those flowers, like those all lovely movements, which takes away the curtain of sadness from our mind. In fact, सुंदर वस्तुएं वो वस्तुएं होती हैं, वो चीज़ें होती हैं जो उदासी को, जो निराशा को हमारे मन मस्तिष्क से हमेशा दूर ले जाती हैं. और उन सुंदर वस्तुओं की तलाश, उन वस्तुओं की खोज हम हमेशा करते रहते हैं. चिल्ड्रन, सम आर डार्क स्पिरिट्स सच even they take away the curtain of the sadness from our spirit, from our soul, from our conscience. वो हमारी आत्मा पर से दुविधाओं के बंधन को, निराशा के बंधन को दूर कर देती हैं. Some such the sun, the moon, trees old and young sprouting. In fact, what the beautiful things are. Poet described, poet gave some examples here. कवि ने कुछ एग्जाम्पल दिए, बड़े सुंदर एग्जाम्पल. The sun, the moon. Now you may have a question, how the sun is beautiful. In fact, children, it never use any partiality about to serve its light. It never stay away from fulfilling its duties. In fact, सुंदर वस्तु है जहाँ पर किसी तरह का भेदभाव नहीं होता, जहाँ ऊंच नीच नहीं होती, जहाँ अपने कर्तव्य से विमुखता नहीं होती, हम अपने कर्तव्य से नहीं भटकते. दो ऑल द थिंग्स आर ब्यूटीफुल. मून, इट्स कंटिन्यू इट्स ड्यूटीज. सन also the same. Young trees, even the sprouting, which provide a shady boon for the simple sheep. पेड़ के नीचे एक साधारण सी भेड़ जाए, एक अमीर इंसान जाए, it provides its shades to one and all. It doesn't matter whether the man belongs to a particular religion, particular caste, particular shape of the appearance. It doesn't matter. The same way, beautiful things never has any relation with partiality or injustice. Children, and such are daffodils. Like the sun, like moon and trees, the daffodils are also with the green world they live in, along with the complete interworld where they live in, the beautiful green surrounding.
हरे भरे संसार में जहाँ डैफोडिल्स के फ्लावर्स भी खुलते हैं, वो भी इसी तरह का एग्जाम्पल है, वो भी ब्यूटीफुल थिंग्स का एग्जाम्पल है. इन एंड क्लियर रिल्स इन द फॉरेस्ट वेयर देयर इज अ ब्यूटीफुल स्ट्रीम, एक सुंदर सी नदी बह रही है. एंड that for themselves the cooling covered make against the hot season. A beautiful clear stream along with along with a cooling covered under the shelter of the bushes, which provide the coolness, calmness, जो बड़ी ठंडक राहत देने वाली झाड़ियों के झुंड के नीचे नदी के किनारे पर खिले हुए डैफोडिल्स के फ्लावर्स हैं. एंड दे प्रोवाइड यू शेल्टर, रिलीफ, रिलैक्स, रियली फ्रेशनेस ऑफ माइंड एंड बॉडी अगेंस्ट द हॉट सीजन. गर्मी के खिलाफ आपको राहत देने वाले होते हैं. चिल्ड्रन, द मिड फॉरेस्ट दे ब्रेक. As suppose you are walking in a forest and find such lovely scene, when you are fully tired, then you must feel heaven feeling, heaven-like feelings there, rich with sprinkling of fair musk rose blooms, and where you will find the wild roses, the beautiful blooming flowers, and such too is the grandeur of the doom. In fact, according to the poet, even there is a respect, there is a greatness in the dooms, in the dead, as such we have imagined for the mighty dead. As we imagine, we measure in our mind about the death. Some people, some poets, some scholars wrote that death is really very powerful, very beautiful. बहुत सुंदर होती होगी मौत. अमिताभ बच्चन एक फिल्म में गाना गाया था, और वैसे भी बहुत सारी बातें इस बात को सिद्ध करती हैं कि वास्तव में मौत बहुत खूबसूरत होगी, क्योंकि जिसने भी मौत को प्राप्त किया वो कभी वापस नहीं आया. पोइट भी एक्सप्लेन करता है कि वास्तव में महान होती है वो मौत, वो मृत्यु जो दूसरे लोगों के लिए खूबसूरती, स्वतंत्रता, आज़ादी प्राप्त कर दिलाती है. चिल्ड्रन, ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड और रीड, what the beautiful things are. You might have another time question. Once he provided you example of sun, moon, and even the wild forest greenery, and another example he gave about the death. And again he is here with an example that all lovely tales we heard or read, जितनी भी सुंदर कहानियाँ I want to share along with the explanation of this poem. इस पोएम के एक्सप्लेनेशन से अलग एक छोटी सी बात आपको बता रहा हूँ. Children, beautiful things are those brave stories which make you to face the disaster, the struggle. If you get something positive, you must get it, either it is from the enemy side. But if there is negative, even to maintain the balance of your brain, neither you go to the depression or hypertension, you must have to take all those beautiful tales which are according to the poet are the beautiful things which you have heard or read and pouring on to us from the heaven's brink. And those beautiful tales you have read somewhere or you have heard somewhere are like the beautiful or the most beautiful drink, the liquid which is serving us from the heaven side, which is served us from the God side. So dear children, if you feel that the external appearance of a person can beautify him, beautify her, it is a wrong concept. In fact, poet John Keats explained what the beautiful things. In fact, once more I would like to say you, along with the explanation of the poem, कि जिंदगी में खूबसूरती, सुंदरता हमारे बाहरी रूपरेखा, पहनावे और बनावट में नहीं होती. सुंदरता हमारे चरित्र में, हमारे व्यवहार में, हमारे विचारों में होती है. सो प्लीज रिमेंबर इट एंड आई होप यू गेट द कंप्लीट पोएम फॉर योर बोर्ड एग्जाम आंसर पर्पस along with the inspiration for your real life. Have a nice day, children.